Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So read and enjoy a poem Ice Cream Man. I hope all of you like ice cream, isn't it? Having ice cream in summer. गर्मियों में आइसक्रीम खाना हम सभी को पसंद है, बच्चे हो या बड़े. बच्चों को तो कलरफुल आइसक्रीम बहुत पसंद है. What is cold, sweet and creamy? क्या ठंडा मीठा और मलाई वाला and wonderful to eat. Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. सबसे wonderful चीज जो होती है, जो कि ठंडी भी होती है, मीठी भी होती है और मलाईदार होती है, वो क्या होती है? जो हमें समर के मौसम में बहुत पसंद होती है, वो है आइस. When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with moons of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fudge, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. तो एक आइसक्रीम मैन के बारे में है और आइसक्रीम्स वो उसकी जो छोटी सी गाड़ी होती है टुन टुन बजते हुए आती है, तो कैसा लगता है? When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. In the first stanza, the poet says that it is summertime and the city is burning with scorching heat. बहुत ज्यादा गर्मी से जल रहा था. अगर आप bricks blaze of heat के बारे में हो तो intense direct light often accompanied by heat active burning. So this poem is about an ice cream man, and this poem tells the readers about the most loved person of children during summers, the ice cream man. The poem is written by Rakhel Fields and tells the readers about the happiness he brings during hot summer days. So इसमें एक और बात हमने पढ़ा कि flower bed of roses and sweet peas. ऐसा क्यों लगा था? The poet has compared the ice cream cart with a bed of roses and sweet peas. Poet जो है वो इस आइसक्रीम कार्ट को आइसक्रीम से नहीं बल्कि आइसक्रीम्स को रोजेस यानी कि जो गुलाब के फूल और स्वीट पीस के साथ कंपेयर किया है. लग रहा है कि बहुत सारे फूलों वाला मीठा पीस के साथ कोई गाड़ी आई हो, है ना? बेड हो मतलब. Where the children gather as honey bees, और चिल्ड्रन जो भी जमा हो रहे हैं आइसक्रीम खरीदने के लिए उन्हें हनी बीज कहा जा रहा है कि वो फूलों से नेक्टर चूसने के लिए आ रहे होंगे. Where the children gather as honey bees cluster around the flowers to get nectar. This is how the ice cream man spreads joy and happiness everywhere in the summer. तो इसी तरह से आइसक्रीम मैन जो है जॉय एंड हैप्पीनेस बिखेर रहा था. जिस तरह से हनी बीज को फूलों की तरफ जाते हुए हम लोग देखते हैं, उसी तरह से बच्चे भी आइसक्रीम की गाड़ी की तरफ जा रहे थे. तो why is the cart of the ice cream man compared to a flower bed? फ्लावर बेड के साथ किस लिए कंपेयर किया? क्यों? अभी मैंने बताया जैसा कि because जो बच्चे हैं they will get excited by seeing the ice cream man and they are running towards the ice cream cart. And the ice cream man sells ice creams and soft drinks and has flavors such as vanilla, chocolate and strawberry. तो हम लोग अभी लाइन बाय लाइन मीनिंग करेंगे. When summers in the city, जब गर्मी का मौसम आया सिटी में and bricks a blaze of heat, और बहुत गर्मी, बिल्कुल सन का जो रोशनी है रोशनी के साथ गर्मी भी आ रही थी, तो the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. तो उस समय जो है ट्रिंग ट्रिंग बजती हुई आइसक्रीम मैन की कार चली आ रही थी उस रास्ते से. Beneath his round umbrella, उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे, oh what a joyful sight, इतना सुंदर एक नजारा देखने को मिल रहा था.
To see him fill the cones with moons of cooling brown and white. और कौन सा बहुत अच्छा जॉयफुल साइट था कि वो जो कोन्स है उसको भर रहा था बिल्कुल ब्राउन और व्हाइट कलर में, vanilla, chocolate, strawberry or chili things to drink from bottles full of frosty fizz. कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी वो सेल कर रहा था, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक, बहुत कलरफुल सब कुछ था. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. ऐसा लग रहा था कि उसका कार्ट ना हो बल्कि फूलों की कोई बिस्तर बिछी हो जहाँ पे the way the children cluster around as thick as honey bees, जहाँ पे honey bees झुंड में आ रहे थे उसके नेक्टर के लिए. So this was so nice poem. आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए. There are the new words जो कि आपको इस पोएम में मिला है. Blaze, bright flame or fire. Trundling, moving on small board wheels. Moons, heap, pile. Frosty fizz, chilled drink making a hissing bubbling sound. Cluster, gather around, group of similar things. Now we will do the question answers. Reading is fun. In which season is ice cream popular? कौन सी सीजन में आइसक्रीम बहुत पॉपुलर होता है? आइसक्रीम is popular in summer season. Who feels joyful on seeing the ice cream man? आइसक्रीम मैन को देखकर कौन ज्यादा खुश हो रहा था? Children. Children feel joyful on seeing the ice cream man. बच्चे बहुत खुश हो रहे थे. Name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. कौन-कौन से flavors लेकर आया था ice cream man? The ice cream man has vanilla, chocolate, strawberry flavors of ice cream in his cart. What are the two things that the ice cream man is selling? क्या-क्या सेल कर रहा था? The ice cream man is selling what is the ice cream cart compared to in the poem? The ice cream has been compared to a flower bed in the poem. The ice cream cart was compared to a flower bed in the poem. Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाना बहुत एक्साइटिंग और बहुत एंजॉयबल होती है. सर्दी के मौसम में ऐसा क्या एक्साइटिंग होता है? आप खुद से आंसर लिखिए तो दैट विल बी फाइन. और अदरवाइज वी कैन गो फॉर आइस स्केटिंग इन विंटर सीजन. हम लोग सर्दी के मौसम में आइस स्केटिंग कर सकते हैं. वी कैन डू आइस क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं. वी कैन प्ले आइस हॉकी. We can engage in dog legging activities. We can go for sky jumping in winter season. और भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें. List as many summer activities as you can do. आप समर में क्या क्या कर सकते हैं? Like we can play cards. Means हम लोग इंडोर रहना ज्यादा पसंद करते हैं समर में, so we can play cards indoor. We can play Scribble, we can do river rafting, ice skating and swimming in summer season. Now, group these activities into indoor and outdoor activities. So, इसमें play cards, play Scribble is indoor game and river rafting, ice skating and swimming is outdoor game. Now say aloud, circle the words where you get a z sound. Z को z sound होती है. One is done for you. Honey bees. ऐसा sound आ रहा है. That means honey bees को encircle करना है. Price नहीं. Prize yes इसमें आ रहा है z sound. Maze. Face. Rise. Rise. Blaze. Fizz. लेजी ज साउंड आ रहा है लेजी में. लेसी बिजी बिजी में भी ज साउंड आ रहा है. रेसी रेज रेज रेस एस चेस दिस दीज
crusty. Let's listen. Listen and tell the sounds that these words in the poem produce. इस poem में cart और drink कैसा sound produce कर रहे थे? Can you make these sounds? क्या आप भी ऐसा sound कर सकते हैं? Tring tring, ting ting, इस तरह का sound कुछ आ रहा था. What are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? ये आप अपने observation से लिख सकते हैं. Find out and write a report. Here's a report on Uncle Lal's farm. Father took me to visit Uncle Lal's dairy farm. I saw all of Uncle Lal's cows. He has 50 cows. They eat grass in the big green farms. In the evening, the farmers bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. When writing a report, remember to do these things. Think of a good title, write it correctly, keep to your subject. Tell things in the right order, make your paper look neat. हाँ, तो एक गुड टाइटल आपको रिपोर्ट राइटिंग में जरूरी होती है और राइट इट करेक्टली, स्पेलिंग करेक्ट लिखिए, सब कुछ करेक्ट लिखिए, ग्रामेटिकली करेक्ट कीजिए और जो सब्जेक्ट मैटर दी गई है उसी पर लिखिए. Tell things in the right orders and make your paper look neat. In groups of 4, write a report on different brands of ice creams available in your area. You may use the following clues. Start with a short introduction which contains the topic. Then list the ice cream brands available in your area. So you can write like this. Title you can write like ice cream in the corner. Ice cream is one of the favorite desserts of almost everyone. Ice cream is available in a number of flavors. There are a number of ice cream brands available in my area. Some of them are Amul, Mother Dairy, Vedilal, Gelato, Vinto, Chocolate Marshmallow and Strawberry are the common flavors of ice cream in each of the brands. According to the survey taken, Amul's Kesar Pista flavored ice cream is sold the most in the market. It comes at Rs 80. Mother Dairy's chocolate fudge ice cream is sold the most in the market. Its price is Rs 110. According to me, vanilla ice cream is the most popular of all of them. It is enjoyed almost by everyone. तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं. Now word building. Color the boxes that have rhyming words. City, cart, नहीं. Heat, street, हाँ rhyming हो रहा है. Blows, goes. Do, go. Hard, yard. Ball, doll. Cow, sow. Label, table. Sky, my. Play, obey. Race, face, right, night. These are rhyming words. What do the following words describe in the poem? Joyful, little and round. इनको poem में joyful sight को उस सीनरी को, light cart बहुत ही हल्की बताया गया है. Round जो है वो umbrella को कहा गया है. Color the boxes with the colors of the flavor mentioned in each, like chocolate color, vanilla, orange, blackcurrant, strawberry, raspberry, butterscotch, pista. ये सारे color कीजिए. Draw and color your dream ice cream. आपको किस तरह का आइसक्रीम खाना पसंद है उसे ड्रॉ कीजिए इस जगह में और कलर कीजिए. Describe it using interesting describing words, the colors, the flavors, the size, how it looks, taste, feels, etc. और उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा description लिखना है. Like my dream ice cream would be very large with different colors. It will have many layers in it. Every layer will have its own individual flavor, which will be altogether different to taste. It will be very soft to eat. Right on the top would be the chocolate flavor, which is my favorite, and at the bottom of it would be the vanilla flavor, which I do not like much. I will share my dream ice cream with all my friends and enjoy. Have you ever eaten kulfi? The ice cream man from North India. नॉर्थ इंडिया के जो भी आइसक्रीम मैन होते हैं उनके साथ कुल्फी भी होती है. The following sentences describe how it is served, but they are not in the correct order. Write the correct number before each sentence. He scoops out the kulfi on a plate.
इसको करेक्ट ऑर्डर में डालना है. Then he pours some sweet syrup over it and serve it. The kulfi wala takes the kulfi mold out of the pitcher. He arranges some faluda around it. तो कौन सा काम वो कुल्फी वाला जो है सबसे फर्स्ट करेगा? He scoops out the kulfi on a plate. Next, the kulfi wala takes the kulfi mold out of the pitcher. Then he pours some sweet syrup over it and serves it. He arranges some faluda around it. So question answers Ice Cream Man poem के यहीं तक है. Now there is a story. Okay, we will do it in the next part. So thank you. Hope you like my video. If you like my video, please put a like, and most important is बिना सब्सक्राइब किए आप लोग मेरे चैनल से मत चले जाइएगा. सो बाय बाय.